हम्म। जैसा कि आप सभी जानते हैं, लास्ट 1 महीने से हम HSS के जरिए, IHF के जरिए मोहंती सर के बर्थडे का सेलिब्रेशन कर रहे हैं। ऑफलाइन भी हो रहा है, ऑनलाइन भी हो रहा है। सर के टीचिंग्स जो थी, एज अ गुरु, एज अ मेंटर, एज अ फ्रेंड, किस तरह सर ने काम किया, होम्योपैथी को आगे बढ़ाने में सर ने किस तरह अपना योगदान दिया, तो उसी की एक लास्ट कड़ी है कि हम सब यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। और आज आखिरी सेशन हमारे मेंटर शशिकांत शिंदे सर, जो पूना से हैं, महाराष्ट्र से, तो उनके साथ हम जुड़े हैं। उससे पहले मैं अपना ग्रेटिट्यूड पेश करना चाहूँगा होम्योपैथी के जनक, होम्योपैथी के जिन्होंने होम्योपैथी हमें दी है, जिन्होंने होम्योपैथी को जन्म दिया, इस साइंस को जन्म दिया, हमारे हनीमन सर, केन साहब, बोनी गोस्सन, बोगर, एलन। उसके बाद जैसे जैसे आते गए एक से एक स्टॉलवर्ड्स, मार्गरेट टाइलर भी हैं, क्लेविनियर भी हैं। फिर उसके बाद नए ज़माने के जो स्टॉलवर्ड्स हो चुके, आने लगे, जिस तरह एम एल सैगर सर हैं, शंकरन सर हैं, उसके बाद मिखाइल याकीर, महेश गांधी सर, महेश चंद्रा सर, कलकत्ता में तरफ से भी जो प्रैक्टिस करते हैं, वहाँ से भी काफ़ी लोगों ने होम्योपैथी को आगे बढ़ाया। जैसे कि हम जानते हैं LM खान सर है, सरकार सर हैं। फिर अलग अलग मेथड से, अलग अलग सोच से होम्योपैथी को आगे बढ़ाने में काफ़ी लोगों ने मदद की है। जिस तरह से सुनील आनंद सर हैं, RS सैनी सर हैं, मान सर हैं, मनोज जायसवाल सर, दिलीप जानी सर। अपने जो ग्रुप में होम्योपैथिक जो माइंड मेथड्स अप्लाइड माइंड से प्रैक्टिस करते हैं, वो सभी हैं। जैसा हम जानते हैं, हारून सर है, सचिन कुरालकर सर हैं, अनु मैम हैं, मानिक सर हैं, मानिक सर हैं, यस आनंद सर हैं, अनीता बजाज मैम हैं, स्मिता नाइक मैम हैं, स्मिता पूर्णवाले मैम हैं, रक्षा ठक्कर मैम हैं, लियाकत सर हैं। तो ये सब हमारे गुरु हैं। और मोहंती सर तो उनका ही नाम से ये वेबिनार हो रहा है। तो उन्होंने हमको होम्योपैथी के लिए बहुत कुछ दिया, हमें मार्गदर्शन किया, अलग अलग मेथड से हमने सीखे। तो मैं अपना उनको ग्रेटिट्यूड पेश करता हूँ और सर की तरफ माइक देता हूँ। सर, आप आगे अपनी बात करें। वेलकम सर, और थैंक यू ऑल रिस्पेक्टेड डॉक्टर्स, आप यहाँ आए और आज आपने ये महफिल को सजाया। शशि सर के बारे में अंदाज, उनके ज़िंदगी का अंदाज बोलो, या तो उनके बात करने का अंदाज, या उनके केस टेकिंग का अंदाज, तो उनका एक अंदाज होता है। तो उनके अंदाज से, उनकी लाइफ को जीने के तरीके से मुझे कुछ एक शेर अगर आप इजाजत दो तो। शशि सर, गुस्ताखी ना हो चुप बस, बैठ। बस एक छोटा सा। इरशाद इरशाद। हाँ, तो कहते हैं शायर के शाहों से ना मिला, ना बादशाहों से हमें मिला। शाह मतलब ऐसे एलिगेंस वाली पोस्ट होती है, बड़े लोग होते हैं, उनको शाह बोलते हैं, बादशाह के टाइप होते हैं। तो शायर कहता है कि शाहों से ना मिला, ना बादशाहों से मिला, मुकद्दर भी तो हमें बड़े मुकद्दर से मिला। तो बस यूं ही अंदाज में शशि सर अपनी बात करेंगे कि किस तरह उनको ये मुकद्दर मिला, होम्योपैथी का जो मुकद्दर मिला है, और उनके स्टालवर्ड्स आते हैं उनके जिंदगी में, तो उन्होंने अपनी होम्योपैथी को कैसे संवारा, कैसे निखारा। प्लीज सर, वेलकम। Thank you, sir. I would like to invite Dr. Ashok Avdiya, sir, to pay his gratitude to Dr. Ashok Moonty. सर नमस्कार और थैंक यू मुझे जगह देने के लिए। मोहंती सर के बारे में क्या बोलें, जितना बोलेंगे उतना कम है, और सूरज को दीप दिखाने जैसा होगा। तो हम आज जो बढ़ रहे हैं वो उन्हीं के नक्शे कदम पे हैं, उन्हीं के पदचिन्हों को देख के बढ़ रहे हैं। तो ऐसे गुरुओं को के लिए हम चिर ऋणी होंगे, आखिरी सांस तक हम उनके ऋणी होंगे, जिन्होंने हमें एक रास्ता दिखाया,
प्यार से समझा के चलना सिखाया, और उनकी इस जो हमने सेलिब्रेशन किया उनके लिए, ये सब हम लोगों के दिल से ग्रेटिट्यूड है उन्हें, और उनका ऋण हम कभी नहीं उतार सकते। तो ऐसे गुरुओं को प्रणाम करते हुए, अशोक मोहंती सर को विनम्र प्रणाम करते हुए, और सभी गुरु जो आज उनके कदमों पे चल के हमें सिखा रहे हैं, उन सभी गुरुओं को मेरा सादर प्रणाम करते हुए आज की क्लास प्लीज कंटिन्यू करिए सर। Thank you, sir. I would like to welcome and share your thoughts, sir. शिंदे सर, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है बीच में। I would like to welcome Dr. Parveen Sharma, sir, to come on the platform and please share your thoughts, sir. Thank you, sir. Thank you so much for inviting me on this platform. से हम हमारे मोस्ट बिलवर्ड मास्टर डॉक्टर अशोक कुमार मोहंती सर का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, और उसी सेलिब्रेशन के थ्रू मतलब ढेर सारे अच्छे सेशंस हुए हैं। तो आज का ये जो हमारे रिस्पेक्टेड एंड सीनियर मेंटर डॉक्टर शशिकांत शिंदे सर का ये जो केस है, ये उस और आज का वीसी है, ये उस सेलिब्रेशन का बिल्कुल लास्ट पार्ट है। और सर ने बहुत इंटरेस्टिंग केस प्रेजेंट किया है, और हमारे बिलवर्ड मास्टर के बर्थडे सेलिब्रेशन में मतलब इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता है कि हम सभी जो उनके स्टूडेंट्स रहे हैं उनके बर्थडे सेलिब्रेशन में अपनी तरफ से जो बेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं वो हम करें। तो आई एम रियली ग्रेटफुल टू अवर रिस्पेक्टेड एंड सीनियर मेंटर डॉक्टर शशिकांत शिंदे सर। 2 दिन से सर लगे हुए हैं और बहुत सारा पार्टिसिपेशन भी देखने को मिला है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। Thank you, sir. Mahadik, sir. महाडिक सर है ग्रुप में? आई थिंक नहीं नजर आ रहा है। उन्होंने ज्वाइन तो किया था ग्रुप, शायद वो अभी वीसी ज्वाइन नहीं किया। ठीक है, एम आई ऑडिबल? जी सर, आप सुनाई दे रहे, दिखाई दे रहे। So gratitude to all my gurus, and what we are today is on their shoulder, and it is our life purpose to promote homeopathy, to make our contribution in the progress of homeopathy. I would just like to say 5 minutes about the concept of a guru. Guru is not just a physical presence or entity. It is a tattva or principle, and it is around us 24/7. Guru, or to follow the teachings of Guru, is not only limited to his teachings or his principles, but we can truly follow one Guru when we will adopt his vision. कि मेरे गुरु किस तरीके से सोचते हैं, उस तरीके का अगर मैं सोचने लगूंगा तो I will absorb that Guru Tattva in me. Many of the times we make that we follow the person, but more than a person, his teachings, his principles, and aura is very important, because as a human being there may be 100 lacunae in everybody. So overlooking that lacunae and following what he is trying to teaching us is very important nowadays, because of all this becoming too much closer and too much personal. So many times I had seen that we do not respect our teachers or our gurus, and we just be very, very formal
when talking about them. So this should not happen with anybody, because when somebody is teaching you, he's teaching from their hearts. They want you to grasp all that what they have, and many times we fail to do our personal opinions and other things. So I request you all that if you're following some guru or teacher, just try to overlook some personal things, but try to follow how he's thinking, what he's trying to teach you. And that is very important. Nobody is perfect in this world, so there will be always a lacuna, the person who. Second thing, what I want to share, as a student, we must have unquenchable thirst for the knowledge. Many times we are in the race. How can we get quick fixes? How can we get shortcuts? How can we get tips? But my friends, tips are made for waiters, not for the doctors. So never go beyond the quick fixes, cuts. I actually, in personal life, I admire smart work. So try to endorse in homeopathy 24 by 7. Then and then only you will see that from the thousand directions, knowledge will start following you. One incident I want to tell you, last up to 3 4 months, Dr. Parveen Sharma has sent me to, and we gone in the month of May to take a chakra book of Dr. Mahesh Gandhi sir and everything. But the incidents is happening in this way in my life, that every week I'm getting 3 books, whether I'm ordering it or not. Somebody's gifting me, like the last Monday only, I think Audi Separe was published. That Audi Separe is on my desk today. On that Monday only, I had got that book. Somebody gifted me. So, if you have that attitude and if you have that unquenchable thirst, definitely the quantum field, which you can call me anything like a god, guru, teacher, is going to help you, is going to direct you where you have to go, and that is the your soul mate, soul aim है आपके जिंदगी का. Definitely all the quantum field will going to help you. Second thing, many of the times what I do in my practice, I do not leave the basics. I do not forget organon, I do not forget mater medica, I do not forget provings, I do not forget repertory. Whatever written in the organon, how the case must be taken, follow. I definitely watch for the, is my case is following 10 12 observation, is I'm doing cure or palliation. So as a matter of conscience, we as a homeopath must look for these matters. Otherwise, the example is in front of the you in a form of a case, that how that patient got cure of his skin diseases, of his elements, but after some years he landed in the erosive or osteoarthritis. Why he came today for that pathology? The reason behind it, he never got cured. He just got palliated. So many times I say that mere disappearance of sign and symptom is not cure. So my friends, be serious, and when you are taking follow-up, try to look if the patient observation, and if it is not, then it is a certain alarming bell as homeopath for us. And second thing, the patient does not know the difference between palliation, suppression, cure. So as a homeopath, we have big responsibility to treat the case. And I pay my gratitude to all my teachers, mentors, and participants. And is there anyone who can read the case very fast? Is there anyone who can read the case?
पढ़ता हूँ। Yes, हाँ please. नितिन मैम, यू कैन कंटिन्यू. Okay, sir. Case, I'm packed in my life. I want to move out. This is the case of 49-year-old male patient. He is suffering from osteoarthritis since last 6 years. His mother has some psychiatric problem. She passed few years ago. His father had left his family just after his birth and married to his aunt. Now he is living with his family and father in same building but in separate flats. He is running a grocery shop. Doctor, tell me about your problem. I have joint problem. I had been to various doctors, but everyone told me about uric acid. I consulted orthopedic doctor. He told me that my joints are eroded. It is osteoarthritis. It's not curable, but we can take care that it will not progress. He had given medicines, but no relief. He is showing where he gets throbbing pains. My rest pathology is normal. X-ray shows erosion. Now what to do? He's shown me his interphalangeal joints where pain and deformity occurred. Pain as it crushed. I am bearing this last 6 years. Doctor has given me painkillers which caused side effect in the form of eruptions in the mouth. I explained him the process of case taking. Tell me what's bothering you right now. I'm running a grocery shop. Since last 20 years, I'm packed, busy from morning 7 to evening 10. I take 2 hours afternoon break. I take rest. This is my routine. I don't go anywhere. If I go out, then it bothers me. Half attention at shop, half at outgoing. I go out for one night only. I have good friends. No any bad habit. Just a glass of beer occasionally with friends. Now I'm irritated. My business is running good, but I am packed in shop. Hand gesture, bringing both hands together. Word pack used for second time and with hand gesture. In video 15 point timing दिया हुआ है. Want to come out of this? Now I am tired. But the problem is that what should I do next? I don't want from frying pan to fire. आगीतून उठायचं आणि फुपाट्यात काढायचं. Rest everything is normal. Family life. I had been taking treatment for depression about 10 years ago for about half an year. It was packed in routine, so I got depression. I took Patanjali tablet for same and came completely out of it. Now 5 years, this osteoarthritis. He came out depression but got osteoarthritis. Means it's just disappearance of symptoms on one plane and appeared in another plane. So I always emphasize many times that mere disappearance of pain or some pathology is never cure. We are pushing the patient to deeper dyscrasia. Depression means no chance to go out. I strive to overcome my depression. Everything was finished. I don't know how to handle. I got good doctor who took me from depression. Since Corona, I am not doing exercise, but I am feeling so strong in spite of no exercise. I made up mind to come out of this depression. My financial situation is good. No intention. I get irritated due to parents, but I ignore it. Just shop is bit. What is happening to you? I can't come नहीं out. I मैम, can't enjoy. एक मिनट मैम. Yes, sir. सो हाँ 2 मिनट रुकिए. सो मैंने उसको जब पूछा कि व्हाट इज योर प्रॉब्लम, तो उसने क्या बोला, रीड हाउ कैन वी थिंक इन अ केस टेकिंग ओनली. सो प्लीज शेयर योर थॉट्स. I asked him what is most bothersome complaint to you. What he started talking about. हेलो सर, मैं बोल Yes. दूं? हाँ बोलिए. सर सर ये अपने रूटीन वर्क से जो में वो बंद गया है ना, वो उसका इशू है कि वो अपनी उस लाइफ में से बाहर निकल नहीं सकता है. उसने बार Means- बार एक ही बात बोला है कि मैं Yes. ये मॉर्निंग 7 to रात के 10 बजे तक जो मेरा रूटीन काम है ना, उसमें से मैं बाहर अपने आप को निकालना चाहता हूँ, लेकिन निकाल नहीं पाता हूँ. Okay. So और उस रूटीन वर्क को उसने बहुत बार बताया है. yes, yes. So what is his problem? Is it osteoarthritis or routine? रूटीन. So why he has created osteoarthritis? क्योंकि वो आगे मूव ऑन नहीं कर पा रहा है ना.
वेरी गुड। जॉइंट्स, जो जॉइंट्स रहते हैं ना, वो आपको मोबिलिटी देते हैं। और इसका ओके जो काम है, जिस तरह से वो अपना रूटीन, जो उसका ग्रोसरी शॉप में सवेरे से रात तक बैठना पड़ता है, उसको सपोर्ट नहीं है कोई भी फैमिली। बाकी जितने भी उसके फ्रेंड्स हैं इस बिजनेस में, उनको अपने मतलब फैमिली मेंबर, मतलब बेटा, वाइफ, बहन, भाई, कोई ना कोई मददगार के लिए होता है, बाकी लोगों के पास है। इसके पास नहीं है, वो हेल्पिंग हैंड नहीं है जिसकी वो एक्सपेक्ट करता है। इसके लिए वो ओके ऑस्टियोआर्थराइटिस लग रहा है, ऐसा मुझे लगा। ओके। ग्रोसरी शॉप में क्या होता है? सबसे ज्यादा काम पुड़िया बांधना, शक्कर यस बांधी, सर, गुड़। लेकिन यस ऑस्टियोआर्थराइटिस कहाँ पे होते हैं? इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स में हुआ है। ओके, डेविडसन ने भी वही लिखा है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस, इरोसिव सर। ऑस्टियोआर्थराइटिस फर्स्ट स्टार्टेड टेकिंग केयर ऑफ योर इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स, देन मेटाकार्पो phalangeal joint of the thumb। उसने केस में भी वही बताया है। सो इट इज द डायरेक्टली करेक्ट पैथोलॉजी ही इज बीन डिस्क्राइबिंग। अभी अगर मैं हाथ मेरे काम नहीं कर रहे, स्पेसिफिकली उंगलियां, तो क्या हो जाएगा? सर, उसका उसका काम में की इफिशिएंसी कम होती जाएगी, तो क्या या उसको होगा ज्यादा आगे? टाइम लगेगा, आगे वो धंधा कर ही नहीं चौपट पाएगा। होगा, धंधा ही चौपट होगा। धंधा ही हाँ, चौपट हो जाएगा, सही है। इस इसका हाँ मतलब क्या होगा कि मैं दुकान अभी नहीं जा सकता, क्योंकि मेरे हाथ से मैं कुछ कर नहीं सकता, मेरे उंगलियों से मैं कुछ नहीं कर सकता। So this is how is the construction of the disease, and this is how we create a pathology within us। So यहाँ तक हम लोगों को इतना ही समझना है कि इसके रूटीन की वजह से उसने पेन का जिक्र भी नहीं किया है टोटल इसमें। So it is how our mind creates a disease, and this is in a case taking we have to see the architecture of construction of a disease। Okay, let's proceed। Okay, sir. What is happening to you? I can't come out. I can't enjoy outing, friends, picnic. I can't sleep late morning. If I do it, then loss occurs. You will never find me outside. I am very focused. I am very packed in my schedule. Again packed. I can't rent out my shop because I will get less rent than my earnings. That rent won't be sufficient. Let's continue. What's going on? I am getting good rental income from other sources. I need to handle all stuff. I also have to watch my helper. If he went to his native place for even 8 days, then I have workload as of 1 month. It's so hard work. Now he is going for 1 month. I arrange living, food, accommodation for him. When he leaves, workload comes. I need to attend shop outside purchase orders. It's too hectic, but still I handle it for a month. I have to do it. I get relaxed when he comes back. No work stress. But what's happening in life? Since last 20 years, I am working from morning 7 to 10 p.m. I have not missed this routine for 30 days in my lifetime. I did it non-stop. For other shopkeepers, brother or other person come to help and give them rest. But it's not applicable to me. Now I am tired of this routine. Should I continue, sir? I told my father that we will put shop on rent, but I'm not getting enough rent. They will give me 15,000 rent. I'm also occupied in business. So let's continue. What I will do if I close my shop, if I take new नो, एक agency. मिनट। Yes. इसकी उम्र कितनी है? What is the age of patient? 49 49 बताए थे सर उन्होंने। ओके, वेरी गुड। सो 49 ईयर में हम लोग अपने पिताजी के साथ क्या बात करते हैं? मैं शॉप भाड़े पे दूं या खुद चलाऊं, ये मैं पिताजी के साथ डिस्कस करूंगा क्या? नॉर्मली हम डिसीजन लोग लेना नहीं आ रहा है उसको। यस, इसका मतलब क्या? इसकी जो मेंटल एज कितनी लग रही है आपको? बूढ़ा है, ओल्ड टीनेजर है, टीनेजर। ओल्ड है। जैसे अभी समझो 60 एक साल अपनी का। वीसी अगर चालू है, ओके, अगर किसी को नेचर्स का कॉल आ जाए तो क्या वो मुझे पूछेगा कि सर मैं जाके आऊं क्या? बिल्कुल नहीं।
बेबी बेबी तो नहीं, बेबी तो ऑटोमेटिकली पास कर देगी, विल नॉट वेट फॉर नहीं पेरेंट्स। सर बेबी एट 8 years बताया सर। 8 to 10 years वाले कैसे रहते हैं? ये इसको बोलते हैं स्कूल एज। मैम मैं हाँ जाके आऊँ, ये मैम ये आ रहा है, मैम मुझे पानी पीना है, मैम इसने मेरी पेंसिल चुराई, ये उसकी एज है मेंटल। सो पेशेंट की जो बातें होती है उसमें से हमको उसकी मेंटल एज मैपिंग करनी पड़ती है पर्सन एवोल्यूशन मॉडल में। आप समझ रहे हो ये बात? एट द एज ऑफ 49 he is asking from his father who has done a second marriage and deserted him, then also he is asking। जैसे अगर टीचर ने हमको थप्पड़ भी मारा था, वी डोंट लीव द क्लास। अगर थप्पड़ मारने के बाद हमको अगर प्यास लगती है, पिशाब लगती है, तो हम क्या बोलते हैं? मैम मैं जाके आऊँ क्या? मैम मुझे प्यास लगी है क्या? सो दिस इज द स्कूल एज। जैसे एक स्कूल में रहती है कि आपको 10 बजे पहली बेल हो जाएगी, फिर आपको आना है, मैदान में जमा होना है, फिर आपकी प्रेयर होगी, फिर उसके बाद आपको क्लास में जाना है, फिर 1 बजे छोटी रिसेस होगी, फिर 2 बजे बड़ी रिसेस होगी, फिर 1 घंटे का ग्राउंड होगा। इट इज वेरी पैक्ड। एक रहता है कि आप स्कूल में कैसे भी नहीं जा सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते, इट इज शेड्यूल्ड। आर यू गेटिंग मी? हेलो? हेलो? यस सर, यस सर। कि जैसे स्कूल का बच्चा रहता है उसके तरीके से ये आज भी जी रहा है। ये बात आपको समझ में आ रही है या शुड आई एक्सप्लेन इट मोर? यस सर। तो इसको पर्सनल इवोल्यूशन मॉडल में स्कूल एज बोलते हैं। स्कूल एज स्टार्टिंग फ्रॉम 5-6 years to 10-12 years, okay, till you develop a secondary sexual characters। Are you with me? So, यस यस सर। किसी को कोई डाउट है तो फिर पूछ लेना, क्योंकि केस जैसे जैसे पढ़ेंगे वैसे वैसे हम लोग उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, देन वी विल रीच टू द मेडिसिन। ओके, इफ एनी नो डाउट, नितल मैडम यू कैन कंटिन्यू। okay, sir. सर, लेकिन वो तो रेगुलर डिस्कशन भी हो सकता है ना, कि जैसे हम लोग भाई लोग के साथ करते हैं, कभी भी 25 पे भी करते हैं, 45 पे भी करते हैं, ऐसे करते हैं ना कि ये करना अभी रेंट पे दूं कि नहीं। मतलब इट कुड बी जनरल। हम लोग ने हाव नहीं देखा है, तो आप जो बोलते हैं मान रहे हैं, लेकिन वो थोड़ा देखिए सर, अगर मुझे ऐसे जैसे आप हो, आपकी सर डिग्री क्या है सर? मेडिकल एमबीबीएस डिग्री क्या है? हाँ एमबीबीएस हूँ मैं, बीएनबी की है। हाँ, लेकिन आप होम्योपैथी करते हो, बराबर? करेक्ट। आपको दिल में चाह उठी कि मैं होम्योपैथी करूं, जो भी रीजन रहेगा, करेक्ट। के साथ, मिसेस के साथ, बच्चों के साथ डिस्कस किया हो कि दीज आर प्रोज एंड कॉन्स, ओके, और उसमें से 50% लोगों ने बोला होगा यू आर टेकिंग अनड्यू रिस्क, 50% लोगों ने बोला होगा कि चलो भाई तो अगर दिल करते तो कर ली। तो ऐसा तो नहीं है ना कि आपको होम्योपैथी करनी है और आपके घर वाले बोल रहे कि नहीं नहीं एलोपैथी मत करो। नहीं, हो वैसा तो सकता नहीं है हो रहा है। हो सकता है उसके ऊपर देर में मीटिंग हो जाए कि 2 दफा मिलना पड़े, बीवी बोलेगी मेरे भाई के साथ बात करो, या पिताजी बोलेंगे मौसी के साथ बात करो, फूफा के साथ बात करो, कोई एक्सपीरियंस लोगों के साथ बात करो, लेकिन एटलीस्ट ये तो नहीं होगा ना कि दे विल नॉट एक्नॉलेज इट। और अगर डिनाई भी कर दिया तो क्या आपके पीछे आएंगे क्या वो क्लिनिक में कि भाई देवेश तू क्या कर रहा है आज? नहीं आएंगे वो लोग। सर्टनली जस्ट आई वांट दिस अमाउंट ऑफ मनी टू रन माय फैमिली। बच्चे करेक्ट बोलेंगे हमारी स्कूल फीस जो है वो हमको चाहिए, और इसके पास रिसोर्स है क्या नहीं है? है, फिर भी हो रहा है। हाँ, तो इसका मतलब इट इज नॉट द फादर हु इज creating obstacle or obstructing him, it is his mind who is playing games. So we have to understand here how the patient language behind that sentence. ठीक Do है। you got clear sir? यस 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 यस, फिर आ गया।
नीतल मैम कंटिन्यू कीजिए. Okay, sir. I told my father that we will put shop on rent, but I'm not getting enough rent. They will give me 15,000 rent. I'm also occupied in business. So let's continue. What I will do if I close my shop, if I take new agency or business, I'm doubtful about its success. So I say it's continue this only. But it's running into disease. Means he is suffering due to his business. No break. Continuously same old routine. Let's explore it more and see its experience. You said you are packed in shop and there is nothing new you can venture. Please tell me what is the exact sensation when you are in shop. See, I open shop at 7 a.m. I carry small tiffin of tea, milk, biscuits. Then I go to home by 11 a.m. and take my lunch. I return to shop by 11:30. Then I pursue market, purchase. Then after market by 1 p.m. to 2:15 p.m. I am in shop. My helper comes by 8:30 a.m. I relieve him by 1:30. I take rest till 4 p.m. and then take my dinner. Then continue shop till 10 p.m. Again on second day, same routine. No going and coming apart from this routine. My family members go for outing, but I don't. If I have to go, then I leave by 10:30 and whenever I come back, I have to be in shop. I'm so packed. Everything is normal, but I can't leave the shop. I can't come out. Anything else you need, doctor? You can ask anything. I'm frank. I will tell you. You told me about irritation. Can you tell me bodily sensation of irritation? Pressure. I had stomach problems. I did panchakarma. I had skin problem. If I eat outside food, my stomach gets upset. If I eat more than capacity, I vomit. Doctor told me to eat in limit. I don't have any bad habits. My friends do all this. I'm foodie. Tell me about your stomach problems. Indigestion, gases, distension, heavy feeling. On full stomach, my irritations used to caught up. It used to catch my breath. Doctors told me to eat less. Panchakarma relieved me. What trouble you feel if you eat full? Fullness. Bowel moved out, but distension. These days, I don't have acidity. 2 days before, I ate for 3 times. Generally, I take fruits, milk or diet chuda at night. So, ate biryani at night, it caused me trouble. I can't eat out of limit. Even in such a distress, I am in shock. Again, he is referring the cause of his illness. I can't take rest. My friend do, but I can't. I ate less on that day. It covers. I eat diet chivda at night. My sister is nurse at an OT assistant in nearby hospital. She advised me to meet dietitian in her hospital. Dietitian advised me not to eat full stomach at night. I follow her schedule on time. When I am doing shopkeeping in distress, I feel it. What do you feel? I'm relaxed today. Let's take a rest. Or I am in pain. I am bored today. But I can't. Whatever may be, I have to be in shop. I need to handle it. How does this life feels to you? Normal. I handle it. I want someone else to handle it on that particular day. I will rest. Even if I go to rest more than me, my family members come in stress. I handle everything. When I am not there, I get frequent phone calls. I can't enjoy the rest. Even same thing for outing. My business is not too big or small. It's medium. I need to be in touch with it. Today also, I got 3 phone calls from shop. I need to adjust. How does life seems to be? I feel great. Even in such a distress, I'm handling it. It's me who is bearing all this. Other one can't do it. Those who have started with me all close their ventures. Since last 20 years, I'm persistent. I'm handling all shop family members. I have 2 mothers. One mother died. She had some psychiatric problem. Father done second marriage. When I was in 7th standard, father abandoned us and done second marriage. We were not in contact for 15 years. My elder sister and brother handled everything. Mother died 2 years ago. I had gone through hard troubles, but still I built so much. His phone rang. See, this happens. I came here for myself, but wife asking me, do I finish my consultation? Wife is good housewife. She kept house perfectly, but being Marathi woman, not helping in shopkeeping. No support. I have closed competition, but that shop changed tenants
3 times. They open shop at 7 a.m. and close it by 11 p.m. They don't close shop in afternoon. I close my shop in afternoon hours, take rest. They have whole family to support them. I am self-satisfied. With afternoon nap, I get fresh. They husband wife continuously present in shop from morning to evening. I ask my wife to follow their footsteps, but she refuses. My customers, friends know that I am going to take afternoon nap. I don't have stress about business. I don't need to give rent or other maintenance. Just I must be occupied. Suppose if you quit the shop, how एक would be your मिनट एक मिनट. So is it that the father is basically problem who is not allowing him to close the shop or change the shop or change the business? No, sir. So what he said, I must be occupied. Have you heard that word line? आप लोगों ने सुना वो बात? Yes, sir. Yes. इसका मतलब क्या है कि इसने जो बोला कि मैं बिजनेस छोड़ नहीं सकता, ये नहीं है, उसको कुछ ना कुछ करने का चाहिए, अदरवाइज बन जाएगा. इसका मतलब क्या है, नॉर्मल पीपल जिनके पास अभी एक लग्जरी लाइफ हो सकती है वो नहीं ले रहे और इसको ऑक्यूपाइड चाहिए. इसका मतलब इसके जो थॉट्स है दे आर प्रोक्यूरिंग हिम. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हेलो, हैव यू गॉट द फील? Who wants to be constantly occupied? बात कीजिए सभी लोग, हाँ ना में जवाब दीजिए. Insects. रेमेडी के द्वारा मत चाहिए. Who needs to be constantly occupied means who. Restless person. You getting my point? कि कुछ ना कुछ चाहिए, ऐसे 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 ऐसे. नहीं तो फिर मैं ऐसे ऐसे. स्कूल में कुछ बच्चे रहते हैं जो एक जगह पे बैठ नहीं सकते. They need constant attention and occupation. So this we have to see in this case that whatever he is projecting, बीवी मदद नहीं करती, ये सब झूठ है. मैंने उसकी बीवी के साथ भी बात की थी, उसको भरोसा. अभी बच्चा उसका जो है उसका 12th पास हो गया, नाउ ही इज परस्यूइंग हिज कॉमर्स. जब एग्जाम्स है या क्लास, ट्यूशन, कॉलेज, वो कैसे उसके दुकान पे आके बैठेगा, आप मुझे बोलिए. फिर भी उसके फादर दुकान पे आते हैं, बैठते हैं, संभालते नहीं लेकिन बैठते हैं एज अ कंपनी. लेकिन इसकी खुद की एक अंदर की एंजाइटी है, रेस्टलेस, इसको ऑक्युपाइड रहना है. आर यू गेटिंग मी? Yes, sir. नितल मैम कंटिन्यू कीजिए. Suppose if you quit the shop, how would be your life? If I come out of this, would I remain stable or will I carried away? What to do? So I say continue with this. It's flourishing business. If these pains go away, I'm okay. I will enjoy. It is so painful that tears flow from my eyes. I want to come out of this illness. Coming out of the illness, due to busy schedule, he can't come out of the shop or business. This is the conflict. I want to go right, but due to condition, I have to go left. This is the hint for column or super class. Even I continue. एक मिनट. कौन सा सुपर क्लास या कौन सा कॉलम रहेगा, चलो बताइए. अभी मैंने तो बहुत सारे शेयर किए हैं. केस टेकिंग में अगर आपको कहीं पे कॉलम मिल जाता है, रो तो पहले भी मिल चुकी है. ओके, बोलिए. पीएम में क्या रहता है कि आपको जो पेशेंट है आपको सिर्फ 6 कॉलम में बांटना है. यह सबका सुपर क्लास में 6 सुपर क्लासेस. तो आपको कौन सा लगता है यहाँ पे क्लास?
सब लोग नए हैं सर, हो सकता है वो सब लोगों ने जो अभी ज्वाइन भी किए, जरूरी नहीं कि उन्होंने वो चैट पढ़ी हो। Sir, 5 super तो class. Yes. Why? Because एक तो उसका जो रेस्टलेसनेस है और वो मतलब उसमें रेस्टलेसनेस है, ही वांट टू गेट आउट, और ऐसे नहीं, जो इसका फिफ्थ स्ट्रेस है। सुपर क्लास जो है ना मैम, हाँ उसमें सर, क्या रहता है कि मुझे राइट में जाना है, हाँ हाँ, ये स्प्लिट है, लेकिन स्प्लिट है। लेकिन मुझे लेफ्ट में जाना पड़ता है। वो जो मैंने मछली का जो शेयर किया था ना पिक्चर, या मैंने बोला था कभी हाँ कभी ना, जो मूवी का टाइटल दिया था, यस, अच्छा होता है। डॉक्टर में होता ना, मैं इंजीनियर बनता ना, आईटी में जाता ना, बहुत अच्छा रहता है। लेकिन नहीं यार, डॉक्टर वो आईटी का कौन 24 आवर स्क्रीन के ऊपर रहे, अपने मेडिकल का अच्छा, जब चाहे बंद करो खोलो अपनी मर्जी के राजे। तो इट इज ऑलवेज दे आर फ्लक्चुएटिंग बिटवीन टू पोल्स, दिस इज कॉल्ड एज स्प्लिट। So this is the characteristics of a fifth column or fifth superclass. Have you understood it? सब लोगों को समझ में आ रहा है? यस सर। सुपर क्लास थोड़ा बता दो ना, एक मतलब मुझे नहीं समझ। होम्योपैथी में पीएम में 6 सुपर क्लासेस है। फर्स्ट इज क्लिंगिंग, सेकंड वन इज इन एंड आउट, थर्ड वन इज फ्रीडम, फोर्थ वन इज सिक्योरिटी, फिफ्थ वन इज split, and sixth one is outside world is very dangerous, fear and flight. तो अगर ये मैंने एक ग्रुप में तो लिखा रहेगा कि सुपर कॉलम 1 का पेशेंट है, तो क्या बोलेगा, ये दुकान में मैं जब रहता हूँ तो ऐसे लगता है मैं कहीं अजनबी जगह पे आया हूँ। रोज मैं 30 ईयर्स से सर मैं यहीं पे आता हूँ, लेकिन ऐसे लगता है कि हर दिन कोई नई स्पेस में, नए प्लेस में आया हूँ। ये ऐसे दुकान मुझे मेरा लगता ही नहीं है। तो दैट वुड बी द कॉलम 1, स्पेस्ड आउट फीलिंग रहती है यहाँ पे। कॉलम 2 में क्या है कि दुकान में मैं हूँ, बाहर मजा चलता है, लेकिन मजे में बहुत डेंजरस है। ऊम से पेशेंट रहते, लिथियम, बेरिलियम, बरेटा, ऊम में दे आर वेरी हैप्पी, ऊम के बाहर नहीं जाना है अभी भी। सो दैट इज कॉलम 2। कॉलम 3 में क्या है कि आई वांट टू गेट आउट ऑफ इट, इज वेरी क्लॉस्ट्रोफोबिक, ये छुटकारा चाहिए मुझसे, आग लगा दो दुकान को, लेकिन मुझे छुटकारा ही चाहिए। जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन हम लोग देखा है पीरियोडिक टेबल में, दे वांट टू कम आउट। फोर्थ में क्या है कि मुझे अच्छा सा घर है, अच्छा सा बेड है, लाइफ सुकून के साथ कटनी चाहिए, बस कोई टेंशन नहीं चाहिए। फिफ्थ में क्या रहता है कि मुझे ये करना है, लेकिन मुझे ये करना पड़ रहा है, कि मेरा दिल कहीं पे है, मेरा दिमाग कहीं पे है। वो एक गाना था ना दिल के मानसने का, तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है। तो और कॉलम 6 में क्या रहता है कि आउटसाइड वर्ल्ड इज वेरी फेरोशियस, कुछ भी कभी भी हो सकता है, बॉम्ब ब्लास्ट हो सकते हैं, एक्सीडेंट हो सकते हैं, इंजरीज हो सकती है, कहीं पे बम फट सकते हैं। तो इट इज वेरी रिस्की प्लेस, आउटसाइड वर्ल्ड इज वेरी रिस्की प्लेस, बट दे डू नॉट हैव एनी कम बैक। So this is how we look 6 columns in a, लेकिन मैं बाहर जा नहीं सकता, ये कर रहा हूँ ये भी छोड़ नहीं सकता, अगर ये छोड़ूंगा तो मैं करूंगा क्या, इट इज अ कंफ्लिक्ट। सो दिस बिलोंग्स टू द कॉलम 5। यस मैम, नीतल मैम पढ़िए आगे। Excuse me. Sir, this is columns or rows of the periodic table? No. It is just the theme of a column I'm saying. I'm not telling about anything periodic table. How this theme, it can be anything, plant, mineral, animal, but it is a formulated table made by Dr. Mahesh Gandhi sir. So we have to look at the box. Now what we have got, 2 points we have got. This is column 5 and row is school age. So what we have to see the interaction, what is there at the interaction. Now but what we have got till time, we have got the school age row and column 5, and the memory must be at here.
It may be mineral, it may be plant, it may be animal, it may be sarcopod, nosed, imponderable, whatever may be. Okay, continue, ma'am. Thank you, sir. Fill it out till. No, No, sir. it's okay, sir. Thank you. Thank you. Okay. Even I continue this business for next 10 years, I'm okay with it. I just want continuity. When I go out with friends, it troubles me for 2-3 days. Then I am again coming back to routine. This pain must be ameliorate. Tell me about your skin problems. I had eruptions, dry skin aggravation in winter season. I consulted skin specialist but in vain. Then I consulted Ayurvedic physician. He cleared me by Panchakarma. My skin was looking horrible. It's 15 years back. Now nothing, and depression lasted for 1 to 2 years. Tell me about your depression. I don't want business. I will not do it. I was ignoring shop. Even in depression, I was running shop. I told myself not to get viable. I don't know why I am running shop. Father had wife help. Father and wife helped me in that period. Even in such a situation, I kept shop running. I came out of that. Other person would have committed suicide or completely destroyed, but I remained stable. It was horrible period for 1.5 years. Because of yoga, I became active again. Please explain me viable. What was happening to you? I want to leave everything. Sit at home, do nothing. But I came out of this. My one side is good, for other side I had taken efforts to stabilize it. Didn't have any loans, payments or loss. It's good side. Other side, stop एक मिनट, keeping. ये जो इसने बोला है कि my one side is good and for the other side I had to taken efforts to stabilize it. Can anyone convert it into the rubric? Hello. Yes sir, बोलिए. State of confusion. उसने क्या बोला है? My one side is good and for the other side I had to take efforts to stabilize it. यहाँ पे स्प्लिट दिख Antagonism. रहा है आपको? यहाँ पे स्प्लिट Yes. दिख रहा है आपको कंप्लीटली? Yes, sir. Yes, जो sir. कॉलम 5 के कैरेक्टरिस्टिक्स है, और इसमें इसने स्पेसिफिकली क्या है, मेरी एक साइड बहुत अच्छी है अच्छी है. और दूसरी साइड क्या है, उसके लिए मुझको एफर्ट्स करने पड़ते हैं, स्टेबलाइज करना पड़ता है उसको. दैट इज बॉदरिंग मी. सो व्हाट इज, क्या है ये अदर साइड, क्या है? ये एक साइड गुड है, दूसरी ये साइड बैड कैसी है? साइड होगी. बैड साइड होगी. इसको रूब्रिक में कैसे कन्वर्ट करेंगे? Two wheels antagonism. Sorry. ओके, और Two trains of thought. ओके, और वेरी गुड. गुड और बैड है ये. On one shoulder devil, on one shoulder God. यस, इसको यही कहते हैं sir. मास्टर स्ट्रोक. आई लव यू सर. सर रियली मैंने भी यही सोचा था, लेकिन मुझे नहीं लगा कि ये होगा. तो सैनाकार्डियम. ओके ओके. जैसा तो पेशेंट की जो अपने रेपर्टरी में रूब्रिक है, वो पेशेंट रूबहू बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है? यस सर. So what we have to do, we have to give some chance, space and time to the patient so that patient will automatically explore the rubrics. हमें सिर्फ विटनेस करना है केस को, वो अपने आप रेडीमेड आपको सब बोल देगा. दैट इज द ब्यूटी ऑफ केस टेकिंग. नितिन मैडम कंटिन्यू कीजिए. अभी रेमेडी भी आपको पता चली होगी. Anacardium. सैनाकार्डियम सर. Anacardium. यस यस. Yes, sir. अगर Okay. मैं आपको बोलता हूँ, सर आपने जो मुझे नहीं दिया. हाँ? बोला भी था मुझे गाना गाना है. आपको बोला भी था मुझे गाना गाना है. आपने गाने का मौका I नहीं had दिया. given you chance up to 350. You are not disclosed. आपने मुझे फोन करके 10 मिनट वेस्ट किए मेरे. You are playing two political games, हुसैन सर. मैं अभी अभी थोड़ा समझने लगा हूँ.
थैंक यू सर। नहीं, आप हुसैन सर को नहीं समझ पाओगे। हाँ, हुसैन सर को नहीं समझ पाओगे। नहीं, कोशिश कर रहा हूँ 2 साल से। अभी थोड़ा थोड़ा ABCD पढ़ने लगा हूँ इनकी मैं। अभी पूरा कलमे पढ़ने बाकी है मेरे। इनकी सारी सीधे पढ़ने बाकी है मुझे। प्लीज कैरी सर मैंने नाम बरोबर रखा था। क्या यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर कुछ नहीं। देवेश नारद मुनि सर। ओके नितल मैडम कंटिन्यू कीजिए। ओके सर। एक मिनट सर। My one side is good, for other side, I had taken efforts to stabilize it. I didn't have any loans, payments or loss. It's good side. Other side, shopkeeping has no escape. This is my double track. What is the experience of living in double track? Now I am habitual. I am taking so much efforts, but still this illness, I get depressed. I want to change, but what to do? Tell me about your pressure in chest during acidity. I was feeling as if I'm getting an heart attack, but it's due to incarcerated irritation. When it's used to caught up, I'm not able to breathe. I need to climb staircase up and down, or I used to sit in Vajrasana, but I handled it. Even if in kidding gesture, if you pat me, I used to feel that pressure. Panchakarma relieved me. For these pains also, Panchakarma is my last resort. But it's too costly. It has a lot of restrictions on diet and other stuff. But I am confident that I can do it. As my routine is fixed. Pains are not so intense. I lived with this pain for last 5 years. Now I am tired of allopathic medicines. I don't get cold and cough. But for these pains, I have to eat 4 to 5 tablets daily. Even in cold fever, I am standing in shop. Just take 2 hours rest and go to shop. I want relief in pain. I am ready to face any situation. Just want to continue the things as it is. Face whatever comes to you. Tell me about your dreams. I need good sleep. I get tired so much that once I sleep, I get up in morning only. Just regular daily affairs. Gone here and there. In dreams also, he wants outing, and because of shopkeeping, he doesn't able to fulfill this. So this disease or illness is created in such a way that it will restrict his movement or motion. It is exactly the replica of his suppressed desires. He needs such a medicine which will help him, or has similar mental depression aspect, even though he claims he got cured of it. Skin problems plus osteoarthritis. This case is an excellent example for me that even though the patient got relieved of his signs and symptoms, pains, but if his original disease state, that is which he is born with, if not addressed, that will keep fulminating in some or other ways day by day, in more serious and progressive ways. I had gone to trip, like we book bungalow, go there by afternoon, have a drink, and come back next morning. Only this much. I had gone to Mahabaleshwar after marriage. After that, I never went anywhere. I watched TV, FB. What is your hobby? Even you are not into it, but still, from your heart, you would like to do it. Going out anywhere, but I am so packed that I can't do it. I want someone reliever, but I am not getting it. In our business, you must present physically in shop or your business will be ruined. And what should I do after closing my shop? If agency or other ventures see losses, then I think whatever going is nice. I am much suffered due to the stomach problem. Now I am 90% out of it. Overeating is only mistake. Then I get immediate feedback. Then distension, constipation, acidity. I suffered it for years. Now also this crushing pains. See this picture and tell me whatever comes to you without thinking. Woman 1. तो पेशेंट ने कहा nothing, normal, it's like Mona Lisa. What comes to you within fraction of a second when you saw the picture? She's crying. What are the situations which makes anyone cry? Like any bad event, mistake, death of dear ones. Mistake means I am insulting my customers. In our business, we need to be patient and sweet. I am outspoken. I am so hard worker. Then also you doubt me. Get lost. I cut off people in a moment. If he is teasing me, I will not spare. Now I want to come out of this. This is the sensation of the case which is
individual, intrinsic, ingrained, inevitable, innate, inherent, integral, rooted, represented, repeated, replicated, related, retained, refined, persistent, primary, permanent, pattern, pervading, projecting, perpetual. I want 9 to 5 job and relax. Now it's time to retire. I had done so much in हो गया sir. Again, some interesting things. He forget his reports in my clinic on first day. On first follow-up after 1 month, he forgot his cap and keys in my clinic. On second follow-up, he forgot location of clinic. This is the case. Nital Thank ma'am. you, Nital ma'am. Thank you so much. Thank you, sir, for Now, giving me this. anyone having books or software, can you read An Academy from Allen's Encyclopedia for 2-5 minutes? Just read the general, mental, and extremities. Is there anyone who can read An Academy from Allen's Encyclopedia? Pramod, सर मैं देखती हूँ तब तक आप कुछ डिस्कस करें मैं ढूंढती हूँ मैम आपकी आवाज अच्छी है मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ पढ़े मैं मेरा वीडियो ऑफ रखता हूँ तो ये पढ़ना है नेचुरल हिस्ट्री Allen's Encyclopedia. Hello, Dr. Shashikant sir. This is my mom's mobile number, and actually my groups are all full, so I have to join through this number. I got Ellen's Encyclopedia, Mind section. Can I read? Yes, ma'am. Please continue. Thank you for the beautiful case and the lovely explanation as well. So, illusion of the fancy. He imagines he hears his name called by the voice of his far distant mother and sister, accompanied by an apprehension of misfortune and anxiety. Excessive cheerfulness. You let me know when to halt, okay? In the afternoon, he is more cheerful than in the forenoon. As soon as the sleepiness after dinner is past, he is more cheerful and more disposed to work. After 38 hours, he laughs when he should be serious. When occupied with serious things, he is obliged to laugh on account of a tickling at the pit of the stomach. When occupied with ludicrous things, he is able to refrain from laughter. Sadness. In the forenoon, he is extremely hypochondriac, low-spirited, and desponding, with awkward and childish manners. All his motions are extremely awkward and indolent after third day. Melancholic illusion. He imagines a bear is in the side room upon which his friends or himself is lying. He is separated from the whole world and has so little confidence in himself that he despairs of being able to do that which is required of him. He is very indifferent and unfeeling. Neither agreeable nor disagreeable objects excite his interest for 8 days. When walking, he felt anxious as if someone were pursuing him. He suspected everything around him. Anxious
apprehension, and thoughtfulness when meditating over his present and future destiny. Anxious, apprehension, and peevishness. Anxiety, apprehension of threatening misfortune, the further appears dangerous to him, as if nothing but misfortune and danger were reserved for him. Want of confidence in his strength and despondency. Anxiety in all his actions, everything appears to him more terrible. He imagines himself surrounded with enemies. Then he feels warm and the blood seems to boil within him. 7th and 8th day. Internal anxiety which did not leave him any peace. He felt solicitous on account of every triple, as if it would lead to some great trouble, with the apprehension of the future. In the evening, anxiety and apprehension after cheerfulness through the day. Irritable and contradicting, a slight offense makes him excessively angry, breaking out in personal violence. Peevish mood all the day. Everything about him made a disagreeable impression upon him. Gloomy, peevish mood with desire to go into the open air. Extremely peevish and ill-humored. Very peevish and ill-tempered. Extremely susceptible to all annoyances. He takes everything in the bad part and becomes violent. Increased fancy, he constantly thinks of some new objects to which the mind forcibly clings. His mind is much more animated than before. He likes to enter without upon acute analysis, but every effort to this kind causes a tearing, pressive headache in the forehead. Extreme excitement of the fancy with the number of projects in the evening from 9 to 10 o'clock. He is not able to control his attention. Little by little, the mind becomes dull, so that he is without any ideas after 16 hours, indisposed to do anything. Every kind of intellectual labor is difficult for him, like a kind of absent-mindedness. Dread of labor, he is afraid of undertaking the least labor. He likes nothing. The mind is much confused, as if a cold were coming on. He confounds the present with the future. Early in the morning, after a sound sleep, he is unable to comprehend the slightest thing. His head feels confused and empty. Dullness of the senses with confusion of the head. Prostration. Dullness of the senses with confusion of the head and prostration. Increase and greater vividness of the memory. He spontaneously recollects the smallest occurrences of times long past. He would be able to learn easily by heart if his attention were not diverted by other things, whichever he finds it easy to control after 1.5 hours. Dullness of the senses with anxiety. He scarcely perceives what is taking place around him. Anacardium weakness, the understanding, and into bracket it is given Matthiolus. Greater weakness of memory, cannot remember anything, forgets everything immediately. He remembers with difficulty. He retains nothing in his memory. He is deficient in ideas, as he soon loses his subject without being aware of it. Diminution of the imagination and the memory in the he cannot recall any after 5-6 hours. He can only reflect on a subject which has been furnished to him. He does not remember anything himself. The memory is quite deficient early in the morning, especially as regards single names. In the afternoon, his memory is better than in forenoon. Although his recollection only comes to him after the time when he was in need of them. However, he easily understands what he read,
what he reads, although it after third, fourth day, thoughts vanish. This is all in regards to the mental from Anacardium, Allen's Okay, Encyclopedia. ma'am. Thank Now I you. will request Dr. Rahul Chitre sir to read its book, Anacardium. So we have one proving aspect. Now we'll see the modern aspect also of Anacardium. Yes, Dr. Rahul sir. Okay. यूजर नहीं आ रहे हैं राहुल सर। दो मिनट में उनको कॉल लगा रहा हूँ। Okay, sorry. Just a minute. आप शेयर कर सकते हैं राहुल सर? Yes. आप कर रहा हूँ। शेयर करो। शेयर करने से पहले माइक ऑन ही रखना है, माइक को बंद नहीं करना है। यार मैं शेयर नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे पास है, एक मिनट होल्ड कीजिए। हाँ, ओके, हियर इट गोस। दिखाई दे रहा है सबको? जी सर, आप थोड़ा मैक्सिमाइज कीजिए इसको। ओके जी सर, दिख रहा है। ओके सर, बढ़िया। ओके, सल्फिनालिस जो लिखा है ना, इसको भी थोड़ा सा करें ताकि लोगों को ये पता रहे। हाँ, मतलब ये जो है, ये टोटल इसकी ऑर्डर है एनाकार्डियम जिसमें पड़ी है। ये सल्फिनालिस एक बड़ी ऑर्डर है। ये बड़ी ऑर्डर में बाकी जो आप देख रहे हैं, एनाकार्डियेसी, रुटियेसी, ज़ाइगोफेलियेसी, सेपिंडेसी, ये सब उसकी फैमिलीज आती है। और अपनी एनाकार्डियेसी उसके साथ आप लोग देखिए, बहुत सारे लोगों ने रूटा भी बोला है। तो ऐसे गलत नहीं है कुछ रूटा या एनाकार्डियम, लेकिन एक फैमिली, एक बॉक्स में कितनी सारी रेमेडीज है, और इसमें से हमको एक जो सिम्टमेटिक सिमिलर एक रेमेडी चूज करनी है, एक अच्छा सा एक रूब्रिक लेना है, उसका अच्छा सा मटेरियल का। तो आप लोगों के लिए मुझे खुशी इस बात की हो रही थी, आप चाहे जो सिस्टम से प्रैक्टिस करते हो, लेकिन आप सब लोगों ने रूटा यहाँ तक आ गए। ग्वाइकम भी बहुत सारे लोगों ने बोला है। सो इट इज योर एफर्ट्स आर ऑल इनक्रेडिबल। आई जस्ट वांट टू थैंक यू, and you are doing very fantastic in your practice. Now we will see the anacardium. Should I go to anacardiacy directly? Yes, no issue. Okay. Anybody reading it out? मैम आइए। ओके, पूरा स्टार्ट से पढ़ना है सर? जी, आप पढ़िए, आप पढ़ रही है, पास पढ़िए अपने अंदाज में। हाँ सर, एक मिनट, बस स्क्रीन एडजस्ट करना पड़ेगा, छोटी है ना। ओके सर, तो इसको कर सकते हैं बड़ा, इस राइट कॉर्नर थोड़ा सा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, an inner split is prominent on many levels: division of will, indecisive cruelty,
on one hand and softness on other, caressing husband and child, then pushes them away, an angel on one side and devil on other, kissing hands of his companions on cruelty. A remedy for children with behavioral complaints who had a twin that died in utero and was absorbed by the womb. Grand George. A suppressive masculine figure is in the background, a strict, rigid fisher or father or father or very religious and authoritarian parents, etc. As a result, part of the soul is suppressed, denied of the right to exist. This leads to lack of self-confidence, feeling that whatever one does won't be good enough, never certain. They made the right choice, asking for advice again and repeating the same question. Feels helpless, dependent, inferior, and afraid of failing. Thus, it is a good remedy for students under exam pressure, pushing themselves to study intensely. Consequently, complaints of memory, thinking, processes, and studying, typical of the whole Sapindal's order. There is a split between the mind and emotions. The energy does not flow, which is expressed physically as a plug sensation, emotionally as a lack of feeling, and mentally as difficulty in concentrating, mental plug, as it is suppression, abuse, and forsaken feeling, contribute to creating the sense of split in anacardium. The split is in the middle, as if there is no heart in the center. Anacardium with the sense of being blocked, as well the sensation of a plug. When the heart lost the ability to feel the emotions, disconnect, and there is no sense of having Lockets into feeling. the chest. Without feeling, one can perform horrible or unobservant. Hold for 10 counts. कौन बोला पीछे? Unobservant deeds. For example, a man who cold-bloodedly premeditates a murder, a girl who has raped and since has no physical sensation of her vagina, trying to have feeling, she resorts to multiple sexual partners. They detach themselves from themselves and from others in an extreme way. Estrange society from, can become dictatorial, abusive, even cruel. Abusive husband insulting wife before children or vice versa. Cursing might become violent or suffer from violence. In the syphilitic stage, they can murder in cold blood. Stiffness, mental plug, develops in the mind, becoming superstitious. Fixed ideas reappearing again and again. The same question. Difficult to concentrate. Sudden loss of memory and even dementia. Alzheimer's or retardation with irritability. Repeating actions again and again. We might see a tendency to rituals and prominent OCD, Alzheimer's with irritability and amelioration when eating. They can reach a bipolar state. On one hand, shy, sweet, and lacks confidence, and on the other, violent and malicious. Just as the mind develops rigidity, the physicals develop stiffness. Complaints of tendons of limbs, sensation of pressure and stress as from a belt stretched over the suffering organ, be it limbs, chest, gums or teeth. Sensation of a plug or a lump can be present in the stomach, umbilical region, rectum or throat, leading to hoarseness, constipation or numbness of the limbs. Eruptions and itching of the limb is also common.
Summary: the remedies theme clearly echo the theme of the order, the dominant suppressive masculine aspect leading to a split between mind and emotion, which in turn leads to manifestation of blocked plug-like symptoms in the mind or in the body. बस हो गया मैम। थैंक यू। Thank you, sir. सो हम लोगों ने अभी 2 किताबों से एनाकार्डियम पढ़ी है। आप केस वापिस से देखना, वापिस से पढ़ना, और आपका क्या एनालिसिस है। अगर जिन लोगों को रूब्रिक्स में देखना है तो आप रेट्रो में रूब्रिक्स लीजिए, कहाँ पे क्या मैच होता है। सो ये केस इसलिए ताकि केस टेकिंग इस तरीके से होनी चाहिए कि आप पेशेंट की लैंग्वेज शुड मैच विद द प्रूविंग, should match with the repertory, should match with the materia medica. That is the only sole aim of sharing this case. And I'm thankful to all my mentors, Dr. Ashok Audia sir, Dr. Parveen sir, Dr. Mahadik sir, who are present physically for this VC. I'm thankful to you, and I'm paying my gratitude to Dr. Ashok Mohanty sir. I'm very fortunate to meet him for 2-3 times in Pune, and we had a very good conversation about homeopathy. So we are done for the day. If you have any queries, post it in the group. This group will be there for coming Sunday. Then we will dissolve it, and the visit will be given to every group. Just don't worry if you have any queries, so that their work will not get disturbed in a particular group. You can put your queries in this group. I will try to answer each and every question. Thank you, Hussain sir, being with us. नो लास्ट का फॉलोअप शेयर करना है क्या? जो नहीं, लास्ट फॉलोअप है ना, देख लेंगे ना, देखा है ना उसका। देखिए वहां से, जहां से उसको यहाँ से चालू हुआ था, राइट नाउ ही हैज मोस्ट इंटेंस पेन इन दिस एरिया। जो केन का 12 ऑब्जर्वेशन है या हेरिंग्स का जो लॉ ऑफ क्योर है, वहां से वो डिसीज यहाँ पे आके अभी सेटल हो रहा है। सो दिस इज व्हाट वी सी इन द फॉलोअप ऑल्सो, कि इज इट फॉलोइंग हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर, केन के 12 ऑब्जर्वेशन में से कौन से ऑब्जर्वेशन में यहाँ पे है। सो ये सब भी मैंने फॉलो इसलिए शेयर किए थे कि उसकी जो पेन है वो लास्ट 2-3 मंथ से थोड़ी कम होने लगी, लेकिन ही वाज इन पेन फॉर फर्स्ट 3-4 मंथ्स। सो दिस इज द समटाइम्स वी हैव टू पे प्राइस, as a patient has also pay price for not getting relief from pain, but he's getting cure. Now we can see the hearings of cure, we can see early aggravation, late amelioration, that is the sign of cure, and we are very confident that patient will definitely will get cure in coming days. He will require one or treatment more, but that is okay. So let's stop here, Hussain sir. Yes sir, thank you all. Thank you sir. Thank you sir, thank you, fantastic case, thank you. Thank you so much. ऐसे मिलते रहेंगे, कोशिश करिए। Thank you. Thank you, Shinde sir. And it was very you, ma'am. nice, because going back to the roots and Ken's 12 observation, then Herring's law of cure in the follow-up, very few people nowadays are talking of the source books, but you have elicited in your case as well. Thank you so much. A lovely understanding of the case. Thank you. Thank All you. best to everyone. Thank you so much, sir. Thank you, sir. Thank you.